Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 14th lecture of this series of Indian Constitution. In this lecture, we would start with the topic socialist or socialism. Please keep go on writing. And we would see the topic socialist or socialism in the light of the Indian Constitution. When we talk about the socialist or socialism, then we have to look the socialism in the view of the Marxist Socialism. And the other point is the Gandhian concept of socialism. Now, what is the concept of Marxist Socialism? Marxist Socialism talks about classless society, then it talks about the reduction of gap between the rich and poor, then it talks about the concept of social welfare, that is, the welfare of the society at large. Then it also talks about state ownership of the resources. Then also talks about establishing the equilibrium within the society. Then how Marxist socialism could be achieved, किस तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं, तो उसका क्या तरीका बताया था. According to the Marxism, when the society is a capitalist society, capitalist मतलब private capitalist, private individuals are the entrepreneurs, businessmen, and who has the only purpose of increasing their profits. और क्योंकि उनको अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने, तो वो सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करेंगे. जो वर्कर्स हैं, नॉर्मल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी आर एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटलिस्ट्स, एंड दैट वुड क्रिएट ए वाइडर गैप between the rich and poor. According to him, the capitalist need four things for the production. किसी भी प्रोडक्शंस के लिए कैपिटलिस्ट को चार चीज की जरूरत होती है. फर्स्ट वन इज लैंड, देन कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड मीन्स व्हाट, बिल्ड, जो भी चीज आप यूज करोगे प्रोडक्शन के लिए, बिल्डिंग, लैंड, वॉटएवर, उसका रेंट आप पे करोगे. अपनी ज़मीन है, फिर भी आप रेंट तो मानोगे, क्योंकि किराए पे उसको आप लगा सकते थे, किराए पे ना लगाकर आप लैंड यूज़ कर रहे हो. द कैपिटल इज़ द मनी बेसिकली दैट यू इन्वेस्ट. अब मनी जो इन्वेस्ट किया उस पर इंटरेस्ट तो होगा, क्योंकि जो मनी हमने इन्वेस्ट किया है, अगर उसको इन्वेस्ट ना करते, बैंक में रखते या फिर, देन वी वुड गेट इंटरेस्ट ऑन इट. और मे बी आई हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक और समवन एल्स, उस पर इंटरेस्ट चल रहा होगा, आई एम पेइंग इंटरेस्ट ऑन अपॉन इट. एंड द एंटरप्रेन्योर इज द कैपिटलिस्ट, और द पर्सन हु वांट टू अर्न द प्रॉफिट, हु विल लाइक टू हैव द प्रॉफिट. देन लेबर, जो लोग काम करते हैं उसके वेजेस, मीन्स उनकी सैलरी. Karl Marx basically talks about the production of goods, not about services, because at that time the context of services was not there. So what Marx says is, in the capitalist economy, for an entrepreneur there are these two things which are static: land, that is rent, and money. They cannot be changed. एंटरप्रेन्योर अगर चाहे तो अपनी मर्जी से इनको चेंज नहीं कर सकता. जो इंटरेस्ट रेट रहेगा मार्केट में वो उतना ही रहेगा, उसको उतने ही इंटरेस्ट रेट पर मनी लेना पड़ेगा या इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो चल रहा होगा. जो रेंट उस मार्केट में चल रहा होगा वो उसी रेंट पर उसको लेना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता इन चीज़ों में. और एंटरप्रेन्योर का लास्ट मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट्स, तो इन दो चीज़ों पर वो होल्ड नहीं रखता. तो इनमें
चेंजेस कर कर वो अपना प्रॉफिट नहीं कमा सकता, बिकॉज दे आर फिक्स्ड, इनको वेरी नहीं कर सकता। एंड द मेन पर्पज ऑफ कैपिटलिस्ट इज टू अर्न प्रॉफिट्स ओनली, सो प्रॉफिट हैज टू बी इंक्रीज्ड एंड एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ मनी and rent are fixed that cannot be curtailed. So what is the only way out? ये जो वेजेस हैं इसको रिड्यूस कर दो, जितना वेजेस रिड्यूस करोगे इतना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा आपका। लेबर क्लास की सैलरी को रिड्यूस कर दोगे जितना उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। सो किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करोगे तो ये चार चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं: लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल। एंड इनमें से लैंड और कैपिटल पर एंटरप्रेन्योर कैन नॉट होल्ड फॉर देयर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट उसको बढ़ाने हैं तो वो एक चीज पर वेजेस को कम कर सकता है और उससे अपने प्रॉफिट इंक्रीज कर सकता है, वेजेस ऑफ लेबर क्लास। सो देयर इज ए डायरेक्ट क्लैश बिटवीन द प्रॉफिट मोटिव of the entrepreneur and the wages of the workers, and these are inversely proportional. Means आपको अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो वेजेस कम करो। सो अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो वेजेस कम करो। तो देयर इज डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रॉफिट एंड entrepreneur and labor class because of profit and wages. So in Marxist theory, bourgeois is the capitalist and proletariat are the workers. A population theory is also given by the Karl Marx in geography, and according to his population theory, the industrialist, the capitalist would always like to have population explosion. जितने ज़्यादा लोग होंगे और जितने गरीब होंगे उतने चॉइसेस उनके पास ज़्यादा होंगे फॉर द लेबर क्लास, और जितनी चॉइसेस उसके पास ज़्यादा होंगे उतना वो और लोगों को रिप्लेस कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट द मार्क्स थ्योरी सजेस्टिंग, दैट इज़ व्हाई देयर इज डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू क्लास एंड द लार्जर सोसाइटी। जो larger populate in terms of population, larger is the labor society. So according to the Marxist theory, अगर इनका इंटरेस्ट देखना है तो आपको जो एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर क्लास है, जो प्रॉफिट वाली क्लास है, इसको आपको ख़त्म करना होगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा। सो इट इज़ बेटर टू रिमूव the class itself. अब removing the class itself does not mean the killing all of them. It is by allowing that let all the resources be owned by the state. All the resources of the country be owned by the state, and the state will pay to the persons according to their capacity. जो जितनी मेहनत करेगा, जितना काम करेगा, अकॉर्डिंगली उसको उतनी सैलरी मिलेगी। सो इट वाज देयर इन यूएसएसआर, जो बाद में ब्रेकअप हुआ, एंड देयर इट इज इन मैनी कंट्रीज। सो इन दिस द स्टेट ओन द एंटायर रिसोर्सेज एंड अकॉर्डिंग टू योर स्किल एंड वर्क इट विल रिम्बर्सिंग यू इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। सो इस तरीके से कैपिटलिस्ट क्लास का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। सो ही वॉज सजेस्टिंग ए कंपल्सिव रिमूवल ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास बाय स्टेट एक्वायरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम एवरीवन एंड स्टेट डिक्लेयरिंग इटसेल्फ द ओनर ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एंड अकॉर्डिंगली देन redistributing the resources in the form of salaries. So this is what the Karl Marx has suggested. So the socialism theory given by the Marx, the socialistic theory given by Marx, one, there was required that there has to be removal of a class,
Which class? The capitalist class. And it is not by persuasion that they will give their property. So it is by compulsion. That is somewhat by force. But force is not in the form of some unlawful means. It is the force by making laws state take away their properties. So this is what socialism according to Karl Marx. And once you attain this, there is automatically social welfare because state will using the entire resources and state will automatically take care of the welfare of the people. This is the Marxist theory of the socialism. इंडिया में ये थ्योरी लागू नहीं होती. In India, this theory will not apply. We have never thought about such a compulsion. Article 39B or C. There also equal distribution of health. States should ensure that there should not be contribution of wealth in few hands. तो ये सारी चीज है उसमें. वहाँ पे फिर भी वो क्या है? That is DPS की. That is not a fundamental right. As an individual right, we and you cannot directly go to the court to enforce that. The state will make laws. The state in fact had made laws. For example, land acquisition laws, जो हमने amendment के समय पढ़ा था. So that is land acquisition. That is for promoting 39B and C only. But in that also, अगर आप land acquisition कर रहे हो, that is also done for the developmental purpose, not just for removing the capitalist class. You talk about Ambani, you talk about Tata. So there are several business class families, mostly 15-20 top business class families in India who are holding much of the wealth. बट इंडिया में हमको हमारी वो पॉलिसी नहीं है कि उनका रिमूवल किया जाए. हमारी पॉलिसी ये है कि अगर किसी के पास एक्सेसिव प्रॉपर्टी है तो उसको हम डेवलपमेंट के लिए दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक मिनिमम बॉटम लाइन है. उसके नीचे आप नहीं जा सकते और उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी आप नहीं छीन सकते. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को आप इंडिया में नहीं ख़त्म कर सकते. But social welfare will always a main directive principle. Social welfare is one of the main directive principle. So any businessman in India, you talk about Ambani or anyone, if they do not take care of social welfare, then question mark can be raised. So in India, we are not doing the under compulsion taking of their property of entrepreneurs as what Karl Marx has suggested. इंडिया में rather more important is social justice. सोशल जस्टिस कैसे अटेन करोगे उसके मीन्स अलग हैं. सोशल जस्टिस कार्ल मार्क्स का भी कॉन्सेप्ट था. कार्ल मार्क्स ने भी कुछ अलग चीज के लिए बात नहीं की थी. ही इज ऑल्सो टॉक्स अबाउट सोशल जस्टिस. बट अवर सोशल जस्टिस हैज टू बी अटेन्ड बाय डिफरेंट मीन्स which was suggested by the Karl Marx. Indian social justice was attained to be by the persuasion and not by the compulsion. Concept तो वही है. इधर भी there is upliftment of the downtrodden, upliftment of the backward classes, reducing the gap between the rich and poor. Everything is there. But the reducing of the gap between rich and poor is not by reducing the rich down. It is by raising the poor to rise up. In India, it is achieved by making the poor rise up. Rich को opportunities दी जाएंगी to grow more and more and become more and more rich. But the people who are less rich, it is not in the economics terms, in all terms, education, whatever, social backwardness also, उनको आपको बराबर उठाकर लाना ऊपर. So that is the concept in India. इंडिया में social justice is from cradle to grave.
वोम टू टोम्ब, जब से पैदा होते हो, गर्भ धारण होते हो, गर्भ में रहते हो, तब से मरने तक, जब से पालने में होते हो तब से कब्र में जाते हो तब तक देयर हैज टू बी ए सिक्योरिटी थ्रू आउट. दैट इज द आइडिया ऑफ social justice in India. In India, it is provided cradle to grave security for say at all ages it is provided. आपको बचपन में एजुकेशन की सिक्योरिटी, यंग होने पर नौकरी की सिक्योरिटी, ओल्ड होने पर ओल्ड एज का सिक्योरिटी, मेडिकल हेल्थ की सिक्योरिटी, all those things should be guaranteed at all levels of your life. That is the idea of socialism in India. Socialism in India is not about wealth, not only about property of equal distribution of wealth. Equal distribution of wealth is always a component of it, but more important is doing a social justice. Individual personality growth. अगर कोई व्यक्ति पुअर है सोशली या इकोनॉमिकली, उसके ओवरऑल इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो उसको मिलनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, उसको अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत है, वो मिलनी चाहिए. मेडिकल केयर की ज़रूरत है, वो मिलना चाहिए. सो दैट इज़ इन लार्जर सेंस सोशलिज्म इन इंडिया. अब वो कैसे अचीव करता है? देयर आर डिफरेंट मीन्स इन इंडिया. फॉर एग्जांपल, से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई बिजनेसमैन है. ऑन वन हैंड इन इंडिया द अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड टू देम टू ग्रो एज मच एज दे कैन एंड अर्न मनी. On the other hand, the state are putting restrictions to or imposing some liabilities upon them to give taxes. Secondly, other impositions are also, for example, invest some money for the environment, invest some money for the societal growth where the production plant or the company was set up. उधर के बच्चों के लिए एजुकेशन सोसाइटी डेवलप करना, उधर के बच्चों के लिए मेडिकल फैसिलिटी के लिए हॉस्पिटल्स डेवलप करना. तो इस तरीके के इम्पोजिशंस गवर्नमेंट लगाकर बैलेंसिंग करती है बिटवीन द रिच एंड पुअर. अब ये गांधीयन सोशलिज्म क्या था? गांधी जी ने कभी भी डेमोक्रेसी फ्रॉम द टॉप की बात नहीं की थी. ही ऑलवेज टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी फ्रॉम द बॉटम, के ग्रास रूट लेवल्स पर डेमोक्रेसी हो, तब वहां से हम ऊपर उठें. ही ऑलवेज टॉक अबाउट द पंचायत, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पंचायत. पंचायत को आप स्ट्रॉन्ग करो, कंट्री अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. बट नेहरू, ही डिड नॉट टॉक अबाउट दिस. अकॉर्डिंग टू हिम, सेंटर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो अपने आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के थ्रू जो लोकल यूनिट्स हैं वो अपने आप स्ट्रॉन्ग होंगे. एंड वी अल्टीमेटली अडॉप्टेड द नेहरूरियन फिलॉसफी. बट जो महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, वहीं से सोशल जस्टिस वॉज कनेक्टेड. टू डू द जस्टिस to the people at the grassroots level, at the bottom level, to the bottom level, automatically the gap into the society will fill. अगर हम ग्रास रूट लेवल पर जस्टिस करेंगे लोगों के साथ, तो जो गैप है सोसाइटी में वो अपने आप भर जाएगा. सो दैट वाज द आइडिया ऑफ गांधी जी. उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी आइडिया से प्रेरित होकर, दैट द गारंटी ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, guarantees of basic minimum decent respectful standard of living to all individuals. उसी से प्रेरित होकर ये जो प्रोग्राम्स हैं चलाए गए हैं, जैसे मनरेगा प्रोग्राम है एंड सेवरल अदर प्रोग्राम्स. सो ऑल दीज आर द डायमेंशंस ऑफ सोशलिज्म, सोशल जस्टिस. सो मनरेगा में जैसे हम वी आर गारंटिंग ए मिनिमम एम्प्लॉयमेंट, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड्स बने हुए हैं, आपको बेसिक फैसिलिटीज दिए जाती हैं. व्हाट इज दैट? दीज आर ऑल इन द लाइट ऑफ सोशल जस्टिस. अब इनका कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितना मिसयूज हो रहा है, कितना इफेक्टिव है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, बट वी आर मूविंग स्टेप टुवर्ड्स दैट. अब इसमें जो कमियां हैं वो भी धीरे धीरे हटाई जाएंगी.
but we do have these programs. For example, PDS system, public distribution system. What is that? कि आपको चावल चीनी सब किफ़ायती रेट पर मिलेगा, सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलेगा. दिस इज द सपोर्ट mechanism that is given to the poorer classes by the government because they cannot afford that standard of living. So ये जितने भी programs हैं, that is for doing social justice. For example, another example say senior citizen का concept, senior pensions. They also got senior citizenship pension. They also got the facilities like in reservation, train reservation, and so many other benefits. So this is all about socialism, Indian socialism. So Indian socialism का concept basic relates to that let the individual personality grow, and overall individual personality growth will ultimately result into overall growth of the national personality. Nation will grow if the individual will grow. So that is the idea in India, and mainly it is about social justice from birth of the person till the death of person. And it should not be in one dimension but in all dimensions. जिस भी तरीके से आप देखो, पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखो, नौकरी के से, शादी दृष्टिकोण से देखो, वॉट एवर परसेप्शन, वॉट एवर पर्सपेक्टिव, social justice in all walks of life. That is the idea of socialism in India. Equal distribution of wealth is only one dimension, but that is not the only dimension in India. Equal distribution of wealth एक DPSP जरूर है, लेकिन कंपल्सिव मेथड से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा. कुछ कंपल्सन है जरूर, बट नॉट दैट कंपल्सन की एंटायर प्रॉपर्टी इज टेकन अवे एंड द स्टेट विल बी द ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूट टू पुअर. दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट इन इंडिया. सो राइट डाउन दीज केसेस on socialism concept. Whatever we have discussed is from these cases. Axel Weir versus Union of India, 1979 Supreme Court. D.S. Nakara versus Union of India, 1983 Supreme Court. Samatha versus State of Andhra Pradesh, 1997 Supreme Court. Write down the full state of Andhra Pradesh. Write down. Indian socialism has to be seen in the different perspective than the Marxist socialism. In the Marxist socialism, the focus was upon social welfare, but through the compulsive mean by removing the capitalist class. Through the compulsive means by removing the capitalist class and by promoting state ownership of resources. On the other hand, Indian socialism is based upon the Gandhian model, in which it is not only about equal distribution of wealth, that is just one of the aspects of socialism in India. But in the Indian constitution, socialism is more about social justice and social security and about a way of life. So that is the first point differentiating the two. In the Marxist socialism, it is redistribution of wealth, state ownership and distribution of wealth according to your work and skills. That is the main aspect in the Marxist socialism. That is the removal of the capitalist class. But in Indian socialism, we are not talking about of any that kind. DPSP में 39B and C talking about the equal distribution of wealth, but that is just one DPSP and that is one small aspect of Indian socialism. Rather, the Indian socialism is more about social security and social justice. So in this way, we can say that the Indian socialism is way ahead than of the Marxism Marxist socialism.
it is not only about the equal distribution of wealth. Write down the second point. The inequality of status and of opportunity has to be removed, and in particular, the inequality because of the caste and class divide in the society shall be removed. So, inequality of status and opportunity has to be removed, and in particular, the inequality because of the caste and class divide in the society shall be removed. Third point is the main focus of socialism in India is to provide social security from cradle to grave, that is, from birth of child till his death, in every walk of life. Social security is guaranteed, shall be guaranteed, is guaranteed. So, when a child is born, the at that stage, the care to the child, the maternal care, the security of medical care to the child, etc. Then his schooling and education, upbringing उसका guarantee. When he becomes young, उसके job की guarantee, education and job. Then thereafter, old age में guarantee of old age security, in medical expenses, in traveling, whatever. All that guarantee should be there. So that is what socialism in India, and that is a step more than the equality of wealth. Then write down next point. There has to be a basic minimum guarantee of standard of living and the guarantee of greater social benefits and stability. Then write down the next point. Socialism in India is not just about socio-economic growth. Rather, it is more about sustained socio-economic growth. So, it is not कि आप social economic development करो बस. So, खाली social economic development से काम नहीं चलेगा. But it has to be जो growth है वो that is to be sustained. It has to be long lasting. So that the benefits of the social economic growth is reached by the next generations also. You must appreciate सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है. आप इतना फास्ट ग्रो कर जाओ कि सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएं और नेक्स्ट जनरेशन को कुछ भी ना मिले, तो दैट इज रॉन्ग. सो इस तरीके का ग्राफ अगर आता है कि रिसोर्सेज सारे कंज्यूम कर लिए और अगली जनरेशन को कुछ ना मिले, तो ये गलत रहेगा. बट योर ग्राफ शुड बी लाइक दिस कि सोशल सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो गेट द रिसोर्सेज. So the growth should be there, but it is in sustainable way and in little bit slower process, so that the next generations also get the benefit of the development. We are talking about the socio-economic growth. Growth on the parameters of social growth, education and all that, and economic you understand, industries and etc. So this growth should be for a longer run and guaranteed for the next generations also. So that is about sustained socio-economic growth. Now write down the next point. In Indian socialism, the individual's personality does not get merged with the state personality. Rather, the idea is that the individual personality shall grow, and together the growth of the personality of individuals will result into the growth of nation's personality. Means सारे resources को state own करे. That idea does not work in India. In India, every individual is having full freedom to grow by its own individual efforts. और ऐसा भी नहीं है आपके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, आपके पास कोई रिसोर्सेज ना हो. People can create their own resources for themselves, and in that way they can grow. And when the all individuals grow, personality of individuals grow, then ultimately the nation's personality also grow. Means when the people of India grow, all of them, obviously the nations also grow. India will also grow.
It is not like the Marxist socialism, wherein the state will own all the resources and will redistribute the income according to the skill and work of the people. Here, all individuals are having full freedom to grow according to his individual efforts and individual skills. आपके ऊपर है आप कितना मर्जी grow कर सको. Every individual is free. And when all the individuals are growing, that ultimately result into the growth of nation. Now there is a point. ये जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी आया था, इसमें हमने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया था. दैट इज द प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट all is promoted. Now the question is it not against the concept of socialism in the Indian constitution? Is not the economic liberalization policy against the concept of socialism in India? क्योंकि सोशलिज्म का एक डायमेंशन है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ 39B and C, and economic liberalization results into the privatization, that is of more of private investment, private money, private entrepreneurs rising up. Then will not that result into concentration of wealth with some private individuals? जो बिजनेस में जाएंगे उनके पास वेल्थ का concentration होगा. Is it not against the spirit of Article 39B and C? Or is it not against the idea of socialism? And if yes, was not that policy is unconstitutional? ये आ चुका है यूपी में क्वेश्चन. In the year 1991, we realized that our national income is not rising that much, and we are needed a higher national income. And more importantly, our import-export से जो income है, that is going very down, and therefore we not able to sustain the globalization process. Because उस समय there was the process of globalization through the WTO etc., wherein the international barriers, जो customs और taxes का barriers है, they were being gradually removed. Now that is economics. Capital account convertibility, करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एक्सेट्रा. हमको करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की तरफ जाना था ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स हो सके. आज भी अगर इंडिया में देखो जो लग्जरी आइटम्स हैं, ब्रांडेड कार्स हैं, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, तो उनका जो अदर कंट्रीज में प्राइस है, इन इंडिया इट इज़ फार मोर देन ऑफ दोज कंट्रीज. जो USA में मर्सिडीज मिल जाएगी 40 लाख में, वो इधर 70-80 लाख में जाकर मिलेगी. सो ये जो ऑलमोस्ट डबल प्राइस हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट, और डबल से भी ज़्यादा हो जाता है. सो बिकॉज ऑफ दिस बैरियर्स, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा, द प्राइजेस गो अप. In the globalization process, we have to phase out these customs barriers, and we have to ensure the free flow of goods from one country to other. So that is pure economics. So in the globalization, that is free flow of goods. तो अभी तो वो टाइम नहीं आया, but maybe in 20, 30, 40 years, coming years में may be possible. So that is one process which is going on. So in order to compete in globalization, you have to be very strong indicators, very strong economic indicators. अब economic indicators में बहुत सारी चीज़ें हैं. First of all is foreign exchange reserves. There has to be a very good favorable balance of foreign exchange reserves in your country. उसके अलावा बहुत सारे सोशल सेक्टर्स के इंडिकेटर हैं, एजुकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा. सो दे शुड बी वेरी स्ट्रांग. अब फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस उस समय हमारा गिर गया था. वी नीडेड ए लोन फ्रॉम द IMF. So we took a loan from the International Monetary Fund, and IMF International Monetary Fund जब भी आपको लोन देगा, there is always a precondition. जब आप इंटरनेशनल लॉ अगर पढ़ोगे, there are various clauses. So as per that clause, if the IMF gives you loan for the immediate balance, but at the same time it will put condition of structural adjustment.
अब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का मतलब है, अब आज अगर आपको लोन की ज़रूरत पड़ी क्योंकि आपका इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, देयरफॉर आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव हो गया या ऑलमोस्ट नेगेटिव हो गया, तो हम आपको लोन तो दे रहे हैं, पर आपको अगर ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस सस्टेन करना है तो आपको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का मतलब है आपको अपने बेसिक इंडिकेटर्स ठीक करने पड़ेंगे। और बेसिक इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमी ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट खूब सारा हो और नेशनल इनकम है वो आपका राइज करे। सो फॉर दैट पर्पस दे इम्पोज 5 ईयर्स का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ड्यूटी अपॉन यू, और उस वजह से हमको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी में जाना पड़ा, बिकॉज वी हैव टेकन लोन फ्रॉम द IMF। प्लस इन द longer run the policy was that we are able to sustain the process of globalization. India is a developing nation, क्योंकि जितने भी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनको कुछ लिबर्टीज दे रखी हैं हमने WTO क्लाउजेज में, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन हैं उनके इकोनॉमिक्स पूरी तरह से ओपन हो चुके हैं amongst themselves, not with the developing nations. फॉर एग्जाम्पल से अगर इंडिया यहाँ से राइस एक्सपोर्ट करना चाहे यूएस, तो यूएस नहीं लेगा, वो बैरियर्स लगाएगा बिकॉज उसको पता है कि यहाँ का राइस ज़्यादा अच्छा है। दैट इज इकोनॉमिक्स। नाउ कमिंग आउट ऑफ दैट, सो दिस वाज द पॉलिसी व्हाई वी बेंट टुवर्ड्स द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। दैट वाज ए काइंड ऑफ मैंडेट एट दैट टाइम. We have to get into that because we have to take loan from IMF. That is fine. But in the longer run, that will make the economy more sustainable and the economy competitive for the global market. तो उसके लिए economic liberalization was essential. अब the point is, अगर economic liberalization करोगे तो privatization बढ़ेगा। Liberalization means what? जितने भी government controlled sectors हैं gradually, फॉर एग्जाम्पल रोड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, जो बहुत सारे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सेक्टर थे उन सबको हमने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया। दैट इज वाई द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज आर नाउ वेरी लिमिटेड। सो द पॉइंट इज, नो डाउट्स द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स and private income, and that will result into the concentration of wealth with some private entrepreneurs. So obviously equal distribution of wealth का concept पूरी तरह से fulfill नहीं हो पाएगा. In fact, it is going against that. But the point is that Indian economy nowhere has, or the Indian constitution nowhere has sought state controlled resources, state controlled property. It does not restrict the private income and private concentration of wealth. In 39B and C, one of the DPSP is that you can, 39B and C is one of the DPSP in which you shall aiming at redistribution of wealth so that the concentration is removed. Concentration of wealth is removed. So 39B and C is fine. बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्पज़ क्या है? दैट इज सोशल सिक्योरिटी, ए पर्टिकुलर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द पीपल। बिकॉज जब आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, नेशनल इनकम मीन्स व्हाट, मतलब आपका जो NDP बढ़ेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इनकम राइजेज, उसकी वजह से क्या होगा? ओवरऑल इनकम बढ़ेगा, तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ बढ़ेगा, तो ओवरऑल लोगों के पास पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। अब वी हैव टू एंश्योर दैट द पर कैपिटा इनकम राइजेज, अदरवाइज तो पुअर क्लासेस तो पुअर ही रह जाएंगे। लेकिन वी हैव टू गो फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थिंग्स इन सच ए मैनर दैट द पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल विल राइजेज, एंड इफ पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल राइजेज then their standard of living will go up and the basic amenities of life they will having more now, because they are having the purchasing capacity because of the rising of the per capita income, and that will ultimately go on to produce better standards of living for people, and that is only one dimension of social security. So that is also one dimension of social security.
So by compromising upon, yeah, by allowing privatization through economic liberalization policy in the longer run, we are actually attaining the higher standard of living for the people, and which is also a very important aspect of social security visualized in the doctrine of socialism, visualized under the doctrine of socialism in the Indian constitution. So it is not against the concept of social justice. It is not against the concept of socialism. It is only a temporary compromise that we have allowed privatization. So is some kind of compromise with the 39B and C, and 39B and C is not the ultimate goal. It is somewhat compromise with the kind of compromise with 39 and B and C. तो ये कुछ compromise तो है 39 B and C के concept के साथ, but 39 B and C का जो concept है is not the ultimate goal of the concept of socialism in India. Ultimate goal of socialism in India is social justice, higher standard and better standard of living. तो अगर हायर नेशनल इनकम से बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अटेन होता है, सो दैट इज ऑल्सो द सर्विंग ऑफ द पर्पज ऑफ सोशलिज्म, एंड देयरफॉर दिस पॉलिसी इज नॉट अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ socialism in India. This policy was not against the concept of socialism in India. Now write down a case upon this. Delhi Science Forum versus Union of India, 1995 Supreme Court. So this issue was discussed in this case. Write down: equal distribution of wealth is not the only and the ultimate goal in India. That is just one aspect of socialism. Rather, more important is the goal of social justice and higher standard of living. By promoting capitalization and privatization, private investment, it is sought to improve. By promoting capitalization and private investment, it is sought to improve the national income, which will ultimately result into a higher per capita income, and that will result into better standard of living. It is this social security which is the ultimate goal of socialism in India, and therefore economic liberalization policy is not violative of concept of socialism. So that's it for this topic, and next we have to start is article 14 onwards. We will continue in the next lecture. Thank you for watching lecture.